जी अतुल भाई, हम अब लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। आप चाहें तो एक एक 30 सेकंड के बाद शुरू कर सकते हैं। ओके। રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના મરાઠી, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન પ્રકૃતિનું અનાવરણ કે જે HP બ્લેવસ્કી લિખિત પુસ્તક છે તેના વક્તા રંજનબેન વૈદ્ય, ભાસ્કર તેંડુલકરજી, રુદ્રાક્ષી દેવ અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું। આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરીશું। વૈશ્વિક પ્રાર્થના હું પહેલા કરાવું છું અને ત્યાર પછી આપ સાથે ફરીથી બોલશો। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ। આજની સભાની શરૂઆત શ્રી તરલભાઈ મુનશી આજની સભાની કાર્યવાહી આગળ કરાવશે। શ્રી તરલભાઈ મુનશી, આપનું સ્વાગત છે। जी अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, तेंदुलकर जी और रुद्राक्षी, तीनों का स्वागत है। सभी दूसरे मेहमान जो पधारे हैं उनका स्वागत है। इन शॉर्ट रंजन जी का परिचय देकर शुरुआत करते हैं। आदरणीय रंजन जी वैद्य स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने कार्य किया है, साथ ही उन्होंने एक ट्रेनर के रूप में भी कार्यशील रही है। उन्होंने भारत के साथ साथ मॉरिशस में भी लेक्चरर्स दिए हैं। रिसर्च पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके पढ़े गए हैं और उन्होंने दिए हैं। संस्कृत भाषा की वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, भाषण में भी और भाषा में भी। थिएटर में उन्होंने कई नाटक किए, अवार्ड्स जीते हैं। वे टीवी एंकर भी रही हैं, आर्टिस्ट भी रही हैं, डांस डायरेक्टर भी रही हैं। मीरा और आम्रपाली जैसे नृत्यों का उन्होंने निर्देशन दिया है। कई बार उन्हें एक बेस्ट शिक्षक का जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया और MA इंग्लिश उन्होंने किया हुआ है। साथ ही वर्तमान में थियोसॉफी फैलाने के लिए उन्होंने एक YouTube चैनल का क्रिएशन किया है अमृतम के नाम से, जिसे वो कहती है नेक्टर ऑफ लाइफ, और उन्होंने साथ ही इस नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है। रंजन बेन, आप आमंत्रित हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबके भीतर छुपे हुए विराजित हुए नारायण को नमस्कार। And those who have helped me to express myself, Taral Bhai and team, I thank you all. Isis Unveiled by HP Blavatsky is a book which Madam herself has expressed somewhere that the Secret Doctrine is 20 times more in caliber than Isis Unveiled. But when I read both the volumes, I was really fascinated, overwhelmed by the insights that this particular book presents. And today I would like to present a few glimpses from that book. Actually, I was fortunate enough that 4 times Madam Blavatsky annual series was presented by me in Baroda, and one of them was on Isis Unveiled, which I covered in 2 days. So today, just a short summary. She says that the work is a fruit of somewhat intimate acquaintance with Eastern adepts and study of their science. She says that she was in contact with Eastern adepts. She's very fond of Eastern adepts. Many times she quotes, even in Secret Doctrine,
and study of their science. That was really the reason, the cause. And this is the fruit of this book is the fruit of acquaintance with them. It is offered to such as are willing to accept truth and to defend it. Only those who are ready to accept truth and accept it as well as defend it, for them this book is meant for. It is an attempt to detect the vital principles which underlie the philosophical systems of the old philosophical systems. From them, she has taken out the vital principles. Its criticism has been directed towards no form of worship, no religious faith, no scientific hypothesis. Men, parties, sects, and schools are but the mere ephemera, that is the temporary ephemera of the world's day. World's day in this world, these are temporary. Men, parties, sects, and schools. Truth, high seated upon its rock of adamant, is alone, eternal, and supreme. Is it too much to believe that man should be developing new sensitivities and a closer relation with nature? She believes, she has a conviction that people will go towards nature. The logic of evolution teaches that if somewhere in the line of ascent from vegetable to the noblest man, that is an evolution, from vegetable to the noblest man, a soul was evolved, gifted with intellectual capacities. It cannot be unreasonable to believe that the faculty of perception is also growing in man, enabling him to describe facts and truths even beyond ordinary ken, means ordinary range of knowledge. Now is the time when we'll go from ordinary to little extraordinary perception. Luckily, Sri Aurobindo also writes, if before our thinking, reasoning, reflecting mind, there was consciousness, and before that there was inconscience, then after that, it is likely to have a greater consciousness, not depending on constructive thoughts. The perceptions will develop. Man will not have to depend on constructive thought. It will be a spontaneous knowledge expressing itself. That's what Sri Aurobindo writes. Many things, many expressions are similar to what Sri Aurobindo writes, and that's why I am allowed to speak about them. When years ago, we first traveled over the East, exploring the penetralia of its deserted centuries. She visited deserted centuries years ago in East. Two saddening and ever-recurring questions oppressed our thoughts. Two questions, ever-recurring, ever-repeating. They oppressed our thoughts. They were oppressing our thoughts. Which are they? Where? Who? What is God? Where is God? Who is God? What is God? While most anxious, we came into contact with certain man, and when we were very conscious, it's a universal law. When we are very conscious, when we are very energetic, and really we appreciate and we try to take out, universe helps us with whatever ideas we have. The solutions are there. And here is the proof. We came into contact with certain man, endowed with such mysterious powers and such profound knowledge. They were the sages of the Orient, not Occident, Orient, Eastern side adepts. They were having mysterious powers and profound knowledge. They showed us that by combining science with religion,
Both our queries may be demonstrated like a problem of Euclid. Earlier, there was no difference between dharma and vijnana. Religion and science, they were not separate. In Oriental language, Oriental knowledge, they both were one. Science was as good as religion. So she says that it may be demonstrated like a problem of Euclid. As the Oriental philosophy had room for no other faith. Oriental philosophy had only one faith. No room for no other faith than an absolute and immovable faith in the omnipotence of man's immortal self. Amrutasya putra vayam. That was the only faith. We are all immortals because we are the children of immortal. And we were also taught, this one thing was taught, and the second thing she said, we were also taught that this omnipotence comes from the kinship of man's spirit with the universal soul, God. One has to have a kinship, relationship, strong intimacy to have this knowledge. And strong intimacy with whom? Universal soul. You may call it God. The former cannot demonstrate the latter. Man, no. Man cannot demonstrate. God can demonstrate. Man's spirit proves God's spirit. As the one drop of water proves a source from which it must have come. If we take one drop of water, we can find that it has come from ocean, the source. So if you know only one drop of that superior or universal soul, you can know completely what the universal soul is. Looking to the mortal man, controlling the forces of nature, and view the world of spirit, when we see that mortal man has been controlling forces, all forces of nature, Prithvi, Jal, Agni, Vaya, Ayu, Akash, all these forces are controlled now by man. And view the world of spirit, Atman. The reflective mind is overwhelmed with the conviction that the capacities of the Father Spirit must be as much vaster as the whole ocean, surpassing the single drop in volume and potency. Man also, who is like a drop of water, he also have volume and potency, but that is surpassed by the ocean, which has extreme capacities. Such knowledge is priceless, and it has been hidden only from those who overlooked it. Those who did not try, they just overlooked it. That for them, this knowledge is hidden. Or denied its existence. And those who denied its existence, they did not believe in that. For them also, this knowledge was not available. So for making this knowledge available, one has to be, one has not to overlook it. And secondly, one has not to deny its existence. Now she quotes Greek philosophers. At the end of part 1, you will know why she is quoting these Greek philosophers. I don't want to disclose it now. Plato, basing all his doctrines upon the presence of the supreme mind. Plato taught that nous, that is spirit, or rational soul of man, being generated by the Divine Father, possessed a nature homogeneous with the divinity, means he possessed the same knowledge, homogeneous with the Supreme, and was capable of beholding the eternal realities. That is what Plato believed, that man is capable of beholding eternal realities. One can do that. This faculty belongs to God alone. The aspiration constitutes philosophy. Aspiration means abhipsa. When one wants to know, then that constitutes philosophy. And what is philosophy? The love of wisdom. Purifying the soul
when one purifies the soul, it raises man to a participation and communion with divinity and restores him to the likeness of God. For that, what is to be done? To purify the soul. Purifying the soul, it raises man to a participation and communion, both with divinity. He can participate and he can commune. Plato says in the Theaetetus that this flight consists in the becoming just and holy with wisdom. The soul cannot come into form of a man if it has never seen the truth. Means the soul has not started from zero. He has seen the truth, and that's why the soul is here. By making the right use of these things, remembered from the former life, if one remembers, you know, there is a beautiful power wherein you can transgress, you can go back and you can know how many births you had and etc. etc. So remember from the former life, then the right use of this, number one, then by constantly perfecting himself in the perfect mysteries. There are plenty of mysteries, and in those mysteries he has to perfect himself. He has to know the mysteries. A man becomes truly perfect. These are the two ways by which he becomes perfect. And initiate into the divine wisdom, and he becomes an initiate into the divine wisdom. Pakka shishya ban jata hai. Such is Platonism. Quoting Ralph Waldo Emerson, my most favorite philosopher, she says, out of Plato come all things that are still written and debated among men of thought. Whatever men of thought are, they are debating and they are writing, everything has come from Plato. He absorbed the learning of his times of Greece from Philolaus to Socrates, then of Pythagoras in Italy, then what he could procure from Egypt and the East. So from all these corners, he procured knowledge. He was so broad that all philosophy, European and Asiatic, was in his doctrines. And to culture and contemplation, contemplation means to concentrate on a particular object. He added the nature and qualities of the poet. He also added the nature of poet, nature and qualities of poet in that. It is certain that Pythagoras awakened the deepest intellectual sympathy of his age. Wonderful statement. Underlining. I have underlined it. Pythagoras awakened the deepest intellectual sympathy of his age. Those who are learned, those who are scholars, and those who express themselves, they get? They get the intellectual sympathy of the age. And that his doctrines exerted a powerful influence upon the mind of Plato. His cardinal idea was, what was the cardinal idea of Pythagoras? That there existed a permanent principle of unity beneath the forms, changes, and other phenomena of the universe. Ekam sat vipra bahudha vadanti. Everywhere there is unity, whether it is a form, there are changes or phenomena of universe. Actually, the real technique Pythagoras adopted, you know, that whoever wanted to be his disciple, he had to have fast for 40 days. He cannot eat food, nothing. At 40 days, one has to fast. Then only one can enter the Academy of Philosophy of Pythagoras. Thus, the key to his dogmas is unity in multiplicity. The one evolving the many. Out of one, many have evolved and pervading the many. And it has already covered many. Out of him and through him
and in him all things are. Out of him, that is the Supreme Soul, through him, and in him, all things are. The object of this book is, or this work is, Madam writes, not to force upon the public the personal views or theories of its author, nor has it pretensions of a scientific work. It does not pretend to be a scientific work with an aim of creating a revolution. No such ideas are there. In some department of thought, I don't want to revolve in some department of thought. No revolution like that. Don't want to force my views, personal views. It is a brief summary of the religious philosophies and the universal traditions of humankind. We wish to show how innumerable failures of psychology and philosophy must continue till these pretended authorities of the West go to the Brahmanas and Lamaists of the far Orient and respectfully ask them to impart the alphabet of true science. We wish to show that innumerable failures have psychology and philosophy have already met with. They can only gain the right kind of knowledge when they go to Brahmanas of Orient and Lamaites of Orient world. Xenocrates, she quotes, Xenocrates forbade the eating of animal food because, like Pythagoras, he had had the Hindu sages for his masters. Lo. Xenocrates had Hindu sages as his masters and models. Cicero, another philosopher, great philosopher, Cicero depicted Xenocrates utterly despising everything except the highest virtue and describes the stainlessness and severe austerity of his character. Cicero gives great credit to this Greek philosopher. To free ourselves from the subjection of sensuous existence. What was his way of behaving or thinking? To free ourselves from the subjection of sensuous existence, to conquer the titanic elements in our terrestrial nature. We have titanic elements in us, and that is to be conquered. That's what Gita says that. I quote later. Zeller says, another philosopher, purity, even in the secret longings of our heart, is the greatest duty. Though purity is the greatest duty, and only philosophy and initiation into the mysteries help toward the attainment of this subject. So Gita also says that to vishayan punsa sangasteshu pajayate sangat sanjayate kama kamat krodho bijayate krodhat bhavati sammoha sammoha smriti vibrama smriti vransthat buddhinashat pranashyati. It is parallel with this particular philosophy. Now why these quotes are there? She clears here. Theosophies in the 16th century were disciples of Heraclitus and Platonists, who regarded the soul and divine spirit as a particle of fire taken from the eternal ocean of light. And that's why she has given us, quoted so many philosophers. The Theosophical Society was organized in New York in 1875. The object of its founders was to experiment practically in the occult powers of nature and to collect and disseminate among Christians. Collect and disseminate among Christians what? Information about the Oriental religious philosophies. And now she will start revealing such things, such mysteries, that she wants that the Christianity must be impressed by this. Christianity must adopt it. So many principles, and that we will see in the second part. If I have time,
I will continue for a few minutes. Yes, definitely you may. There is still 3 minutes time. 3 minutes. Yeah. The yogis of the olden times, as well as modern lamas, use a certain ingredient with a minimum of sulfur and milky juice, which they extract from medicinal plants. This is alchemy. They must certainly be possessed of so wonderful secrets. As we have seen them healing the most rebellious wounds in a few days, restoring broken bones to common surgery. What they did, lamas and they all yogis, they used an ingredient with a minimum of sulfur and milky juice. A fearful fever contracted by the writer near Rangoon after a flood was cured in a few hours by the use of a plant called, if we mistake not, kukushan. Though there may be thousands of natives ignorant of its virtues who are left to die of fever. So this was the achievement of yogis of olden times. No country in the world can boast of more medicinal plants than southern India, Cochin, Burma, Siam, and Ceylon. European physicians, according to time-honored practice, settle the case of professional rivalship by treating the native doctors as quacks. They call them quacks because of rivalry. But this does not prevent the latter from being often successful in cases in which eminent graduates of British and French schools of medicine have signally failed. Native works on materia medica do not certainly contain the secret remedies known and successfully applied by the native doctors. So even in medical field also, this Oriental knowledge has definitely conquered the world. Thank you. Thank you, रंजन जी. अभी मैं आमंत्रित करूंगा तेंदुलकर जी को कि वे मराठी में अपना संभाषण दें. उसके पहले उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. साउंड आ रहा है कैसे? अच्छा जी, देखिए जरा. जी, भास्कर तेंदुलकर जी बड़े ही वरिष्ठ थियोसॉफिस्ट हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी के उन्होंने 1988 में थियोसॉफी ज्वाइन तो की, लेकिन उनके पेरेंट्स के द्वारा उन्होंने नागपुर लॉज ज्वाइन किया. और सॉरी, भास्कर तेंदुलकर जी बीएससी ऑनर्स हैं, एमए एलएलबी हैं. उन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं और काफ़ी सक्रिय रूप से काम किया है. और साथ ही साथ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी वो एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह रहे हैं. वे पूना लॉज के मेंबर करीब 40 वर्षों से हैं. एक्स सेक्रेटरी हैं मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के, एक्स प्रेसिडेंट है पूना लॉज के, एक्स एडिटर ऑफ थियोसॉफी बाय मंथली जो आती है जागृति विश्व बंधु, उसके एडिटर हैं. नेशनल स्पीकर तो हैं ही, और बहुत सारी लॉज फेडरेशन और थियोसॉफी को प्रोपोगेट करने के लिए वो घूमे हैं और बहुत ही ज्ञानकारी और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं. आइए सर, आपका स्वागत है. आपके पास 10 मिनट है, क्योंकि विषय थोड़ा वो है, इसलिए मैं थोड़ा समय बढ़ा रहा हूँ. 10 मिनट तो आपको मिलेंगे ही, प्लस अगर चाहें तो 1 आध मिनट और ले सकते हैं. धन्यवाद. सर अनम्यूट कर लीजिए. Hello. हाँ, अभी आ रही है क्लियर आवाज. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you, Taral ji. Thank you, Ranjan ji also. The subject is, as Taral ji mentioned,
little difficult, and I am going to give my presentation in Marathi of the main speech in English. तर मराठी श्रोत्यांसाठी सांगताना मला मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे की आयसिस अनवेल्ड हा HP ब्लॅव्हॅट्स्कींचा पहिला मोठा ग्रंथ आहे. त्याच्या पूर्वी थिओसॉफीवर फारसं साहित्य असं नव्हतंच, आणि त्यामुळे हा पहिला थिओसॉफिकल ज्ञानाचा किंवा ब्रह्मविद्येचा एक स्रोत HPBनी आपल्याला दिला असं म्हणता येईल. आणि याच्यावर फार सुंदर असं विवेचन आत्ताच आपण इंग्रजीतून ऐकलेलं आहे. ह्या ग्रंथाबद्दल HPB काय म्हणतात हे प्रथम सांगितलेलं आहे त्यांनी. त्यांनी असं म्हटलंय की हा ग्रंथ हा जरी मूळ ग्रंथ असला तरी त्याच्यानंतर त्यांनी जो सिक्रेट डॉक्ट्रिन ग्रंथ लिहिला तो याच्याहून 20 पट सरस आहे असं त्यांनी म्हटलंय. मग प्रश्न पडतो, ह्या ग्रंथाचं अध्ययन आपण करणं खरोखर आवश्यक आहे का? तर त्याचंही उत्तर होय असंच द्यावं लागेल. कारण ह्या ग्रंथामध्ये अशा अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत की ज्या तुम्हाला आश्चर्यकारक अशी ह्या अकल्ट किंवा अदृश्य जगामध्ये पाहण्याची दृष्टी देणारी, अंतर्दृष्टी प्राप्त करून देणारी किंवा दिव्य दृष्टी प्राप्त करून देणारे असं लिखाण आहे. एक उद्देश ह्या ग्रंथाचा थिओसॉफीचा किंवा ह्या ब्रह्मविद्येचा परिचय सगळ्यांना करून देणं हा तर होताच, पण प्रामुख्याने पौरवात्य जगामध्ये असलेलं आध्यात्मिक ज्ञान पाश्चिमात्य जगाला त्याची ओळख करून देणं हा होता. कारण पाश्चिमात्य जगाची अशी समजूत होती की पौरवात्य जग आणि विशेषतः इंडिया, आपला भारत, ज्याच्यावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं, तो एक रानटी मागासलेला देश आहे. संस्कृती, कल्चर, सिव्हिलायझेशन या बाबतीत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्याला काय शिकता येणार? आपल्याकडूनच काही त्यांना शिकवलं पाहिजे, अशा प्रकारची एक आत्मप्रौढी पाश्चात्य जगामध्ये होती. ही केवळ आत्मप्रौढी नव्हती, तर ते एक प्रकारचं अज्ञान होतं. कारण ह्या ग्रंथामध्ये HPBनी हे स्पष्ट केलंय की ज्यावेळी थिओसॉफिकल सोसायटीची 1875 मध्ये स्थापना झाली, त्यावेळी पाश्चात्य जगाला ह्या पौरवात्य संस्कृतीचं, पौरवात्य तत्वज्ञानाचं आणि गूढविद्येचं काही अबकड सुद्धा माहिती नव्हतं. आपले वेद किंवा बौद्धिक तत्वज्ञान, बुद्धाचं तत्वज्ञान, झेन तत्वज्ञान, पारसी धर्माची माहिती, याचा कशाचाही काहीही गंध त्यांना नव्हता. आणि थिओसॉफीच्या मुळे ह्या गोष्टींची त्यांना पहिल्यांदा ओळख झाली. त्यामुळे हा त्यांचा जो एक
मनामधला पूर्वग्रह होता, एक जी अढी होती पौरवात्याबद्दल, हिंदू बौद्ध या सगळ्याबद्दल, ती दूर करणं आवश्यक होतं. कारण मुळात ज्याच्याकडून आपल्याला काही शिकायचं आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला विश्वास असला पाहिजे, त्याला काहीतरी शिकवण्याचा अधिकार आहे, त्याला ज्ञान आहे याची माहिती असायला पाहिजे. आणि तसं असलं तरच ज्ञानाची देवाणघेवाण होऊ शकते. त्यामुळे ह्या ग्रंथाने पहिलं मुख्य कार्य काय केलं असेल तर पाश्चात्य जगाची पौरवात्य धर्म, संस्कृती, तत्वज्ञान आणि विशेषतः अकल्ट किंवा गूढ अशा आध्यात्मिक ज्ञानाबद्दलची त्यांची जी गैरसमजूत किंवा अज्ञान होतं ते दूर करण्याचं काम ह्या ग्रंथाने केलेलं आहे. पौरवात्य जीवनमुक्त ऋषी आणि त्यांचं विज्ञान यांची जवळून ओळख हा या ग्रंथामुळे झालेला फायदा आहे. पण त्यांनी हे स्पष्ट म्हटलंय की सत्य समजून घेण्याची ज्यांना इच्छा आहे आणि ते समजून घेऊन त्याचं प्रतिपादन करण्याची ज्यांची तयारी आहे त्यांच्यासाठी हा ग्रंथ आहे. प्राचीन तत्वज्ञानाच्या मुळाशी असलेलं मूळ तत्व, ज्याला रंजननी व्हायटल प्रिन्सिपल असं म्हटलेलं आहे, ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न ह्या ग्रंथाने केलेला आहे. या ग्रंथामध्ये अनेक उणिवा आहेत असं HPB स्वतःच म्हणतात. भाषिक त्रुटी तर आहेतच, कारण त्यावेळी त्यांचं इंग्रजी तेवढं चांगलं नव्हतं, पण त्याचबरोबर त्याची ठेवण तर्कशुद्ध पद्धतीने झालेली नाही हे त्याही स्वतः मान्य करतात. खरं तर त्यांनी त्याचं वर्णन असं केलंय की हा ग्रंथ असा आहे की वेस्ट पेपर बास्केट मधले अनेक कागद ती बास्केट घुसळून काढायचे आणि ते एकत्र करायचे, तसं काहीसं हे ग्रंथलेखन झालेलं आहे. अर्थात त्यांच्या ह्या सांगण्यात बरीचशी अतिशयोक्ती आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही चुका झाल्यात त्याबद्दलची एक प्रकारची खंत, ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत. पण त्यामुळे त्याचं महत्व मात्र किंचितही कमी होत नाही. त्यांनी म्हटलंय की सत्य हे काळ्या दगडावरील रेघेसारखं आहे, ते अविनाशी आणि अंतिम आहे. उत्क्रांती तत्वानुसार जीवात्म्याला बौद्धिक क्षमतेने संपन्न असल्यामुळे त्याच्या दिव्यदृष्टीचा विकास होणे ही अगदी स्वाभाविक गोष्ट आहे. तेंदुलकर जी 3 minutes more to sum up. ओके. Yeah. पौरवात्य देशातून भ्रमण करताना आपले विचार हे एका देवाच्या अस्तित्वाविषयी समजून घेतले पाहिजे. 2 प्रकारचे ते विचार. पूर्वेकडील ऋषीमुनींच्या संपर्कात आपण आलो आणि त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या गूढ शक्ती आणि प्रचंड ज्ञान याची आपल्याला जाणीव झाली. मनुष्याच्या सर्व शक्तिमान अमर आत्म्याविषयी त्यांची श्रद्धा अढळ होती. परमात्मा आणि आत्मा यांचे अन्योन्य संबंध लक्षात घेता ते विशाल महासागर आणि पाण्याचा थेंब
यांच्यामधील नात्यासारखे आहे. एखादा थेंब जरी तुम्ही घेतलात तरी त्या थेंबामध्ये महासागराच्या सर्व गुणांचा समावेश झालेला असतो. तसं माणूस किंवा माणसाच्या जीवात्मा आणि परमात्मा यांचं नातं आहे. आणि म्हणूनच माणसाच्या ठिकाणी त्या सगळ्या शक्ती आहेत, सुप्त स्वरूपात आहेत, पण सगळ्या शक्ती आहेत ज्या परमात्म्याच्या ठिकाणी आहेत, ज्याच्यापासून सगळ्यांचा उगम झालेला आहे. त्यामुळे ह्या पौरवात्य जगातल्या ह्या ऋषीमुनीकडून आपल्याला दिव्य ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं याची खात्री बाळगून हा प्रयत्न, हा अनव्हेल करण्याचा, आयसिस अनव्हेल, बिफोर व्हेल अशी त्याची प्रस्तावना त्यांनी केली. आणि आफ्टर अनव्हेलिंग आपल्याला काय काय त्याच्यातून ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं हे सांगितलंय. जीवात्म्याला पूर्वजन्माच्या स्मृतीमुळे आत्मस्वरूपाचे ज्ञान असते आणि त्या पूर्वज्ञानाने मनुष्य देहामध्ये त्याचा पुनर्जन्म होतो. अशा प्रकारे माणसाच्या ठिकाणी असलेल्या सुप्त शक्तींचा उलगडा करायचा त्यांनी याच्यामध्ये प्रयत्न केला आहे. त्याच्यात अनेक ग्रीक तत्ववेत्यांचा उल्लेख आहे. राल्फ वाल्डो इमर्सन, प्लेटो यांचे उल्लेख आहेत. यातलं काहीच ज्ञान हे आपल्याला ह्या युरोपमधल्या ग्रीक तत्ववेत्ते यांच्याकडून आपल्याला मिळतं. विशेषतः पायथागोरसचा त्यांनी जो उल्लेख केलाय तो लक्षवेधी आहे. त्यांची शिष्य करून घेण्याची पद्धती काय होती, त्यांची शिकवण्याची पद्धती काय होती, यावर त्यांनी बराच प्रकाश टाकलाय. आणि त्यावेळी त्यांनी असं म्हटलंय की ही सगळी पद्धती, हे सगळं ज्ञान जे त्यावेळच्या समाज मनाला प्रभावित करणारं होतं, ते सगळं भारतामधून तिकडे गेलेलं होतं. पौरवात्य तत्वज्ञानालाच त्यांनी त्या ठिकाणी पश्चिमेकडे देण्याचा प्रयत्न, पहिला मोठा प्रयत्न पायथागोरसने केला. खरी थिओसॉफी ही त्यावेळी पाश्चात्य जगाला मिळाली. त्यानंतर पुन्हा एकदा 1875 मध्ये थिओसॉफिकल सोसायटीची स्थापना करून ते ज्ञान पाश्चात्य जगाला देण्याचा आणि विज्ञानाने प्रगल्भ झालेल्या मानवजातीलाही देण्याचा आणि विज्ञानाला नवी दिशा देण्याचा, अकल्ट सायन्स आणि मटेरियल सायन्स यांना एकत्र सांगण्याचा हा प्रयत्न होता. अंधश्रद्धा दूर करणं, समाज मनाला सुशिक्षित करणं, सत्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन देणं, अशा या थिओसॉफिकल सोसायटीच्या अनेक उद्देशांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने आयसिस अनवेल्ड हा पहिला ग्रंथ त्यांनी लिहिला. आणि त्या पार्श्वभूमीवर या ग्रंथाचं जर आपण अध्ययन केलं तर त्याचा उद्देश सफल होईल. मला वाटतं वेळ संपलेली आहे, म्हणून या ठिकाणी मी थांबतो. काही भाग याचा नंतरच्या उत्तरार्धामध्ये घेण्याचा मी प्रयत्न करेन. जी 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 तेंदुलकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्षी आपका, जी जी रुद्राक्षी आपका स्वागत है। आपके पास भी हिंदी में इस बार थोड़े से ज्यादा 10+3 मिनट्स हैं, अगर आप चाहें तो। रुद्राक्षी का संक्षिप्त परिचय दूं। कक्षा 12वीं की स्टूडेंट है, वेस्टर्न लॉ जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। इसे ट्रेवलिंग, स्पिरिचुअलिटी, पढ़ना और एडवेंचर, डांसिंग और स्पोर्ट्स सब में इंटरेस्ट है। वे कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही हैं और थियोसॉफी, उनके फादर तो हैं ही महेश देव जी थियोसॉफी में, लेकिन उन्हें प्रेरणा विशेषकर मिली है बेसेंट जी के जीवन चरित्र से। और पिछले 5 वर्षों से वे थियोसॉफी से जुड़ी हैं। जिन किताबों से वे इंस्पायर्ड है वो है मैन एंड हिज बॉडीज बाय एनी बेसेंट, माय प्रॉमिस बाय सी जिनराज दास एंड हाउ टीयर्स केम इन माय लाइफ बाय CW लेडवेटर जी। तो बढ़िया है।
और ये किताब के लिए भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया। आइए आप और हिंदी में कहिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। ISIS का नाम मैडम ब्लेवात्स्की द्वारा किया गया। भले ही मैडम HPB ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन को कैलिबर में 20 गुना अधिक माना, मुझे ISIS अनवेल्ड के दोनों संस्करणों में अद्भुत अंतर्दृष्टि मिली। वह कहती है कि यह कार्य पूर्वी अनुयायियों के साथ कुछ घनिष्ठ परिचय और उनके विज्ञान के अध्ययन का फल है। यह उन्हें दिया जाता है जो सत्य को स्वीकार करने और सत्य की रक्षा करने के लिए तैयार है। यह दर्शन की पुरानी प्रणालियों के अंतर्निहित महत्वपूर्ण सिद्धांत का पता लगाने का एक प्रयास है, लेकिन पुरुष पार्टियां, संप्रदाय और स्कूल विश्व दिवस की क्षणभंगुरता है। अपनी अटल चट्टान पर आसीन सत्य ही शाश्वत और सर्वोच्च है। क्या यह विश्वास करना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि मनुष्य नई संवेदनशीलता विकसित कर रहा है और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है? विकासवाद का तर्क सिखाता है कि एक आत्मा को बौद्धिक क्षमताओं के साथ उपहार में दिया गया था। यह विश्वास करना अनुचित नहीं हो सकता है कि सामान्य ज्ञान से परे धारणा के एक संकाय का विकास हो रहा है। जब वर्षों पूर्व हमने पहली बार पूर्व की यात्रा की थी तो इसके निर्जन स्थान की खोज की थी। अभ्यारण्य, वो दुखद और बार बार आने वाले प्रश्नों ने हमारे विचारों को दबा दिया। कहाँ, कौन, ईश्वर क्या है? जबकि सबसे अधिक चिंतित हम ओरिएंट के संतों के संपर्क में आए, जिनके पास रहस्यमय शक्तियां और गहन ज्ञान था। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे दोनों प्रश्नों को यूक्लिड की समस्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मनुष्य की अमर आत्मा की सर्वशक्तिमता में पूर्ण और अचल आस्था है, जो मनुष्य की आत्मा के सार्वभौमिक आत्मा ईश्वर के साथ संबंध से आती है। मनुष्य आत्मा और ईश्वरीय आत्मा को प्रमाणित करती है, जैसे पानी की एक बूंद एक स्रोत को साबित करती है जिससे यह आया होगा। प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नश्वर पुरुषों को देखते हुए चिंतनशील मन आश्वस्त हो जाता है कि पिता आत्मा की क्षमता उतनी ही विशाल होगी जितनी मात्रा और सामर्थ्य में एक बूंद को पार करते हुए पूरा महासागर। ऐसा ज्ञान अमूल्य है और उन लोगों से छिपा हुआ है जिन्होंने इसके अस्तित्व को नकारा था। सर्वोच्च मन की उपस्थिति पर अपने सभी सिद्धांतों को आधारित करते हुए प्लेटो ने सिखाया कि आत्मा या मनुष्य की तत्संगत आत्मा दिव्य पिता द्वारा उत्पन्न की जा रही है, जिसमें दिव्यता के साथ सजातीय प्रकृति है और शाश्वत को देखने में सक्षम है। वास्तविकताओं, यह संकाय अकेले भगवान है। आकांक्षा दर्शन का गठन करती है। ज्ञान का प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। यह मनुष्य को दिव्यता के साथ भागीदारी और एकता के लिए ऊपर उठाता है और उसे भगवान की समानता में पुनर्स्थापित करता है। वे थिएटर्स में कहते हैं, आत्मा मनुष्य के रूप में नहीं आ सकती यदि उसने कभी सत्य को नहीं देखा है। पूर्व जीवन से याद की गई इन बातों का सही उपयोग करके खुद को पूर्ण रहस्यों में लगातार सुधार कर एक आदमी वास्तव में पूर्ण हो जाता है। दिव्य ज्ञान में एक पहल इस प्रकार मैडम प्लेटोनोजियम को परिभाषित करती है। गल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो मेरे आइकन भी है, को उद्धृत करते हुए वह लिखती है, प्लेटो से वे सभी चीजें आती है जो अभी भी लिखी गई है और विचार के पुरुषों के बीच बहस की जाती है। उन्होंने फिलिलोस से ग्रीस तक के अपने समय की शिक्षा को आत्मसात किया। उसके बाद इटली में पाइथागोरस को
फिर वह मिस्र और पूर्व से प्राप्त कर सकता था। सभी दर्शन यूरोपीय और एशियाई उनके सिद्धांतों में थे और संस्कृति चिंतन के साथ उन्होंने कवि की प्रकृति और गुणों को जोड़ा। आगे उद्धृत करते हुए वह कहती है कि पाइथागोरस ने अपने समय की सबसे गहरी बौद्धिक सहानुभूति जगाई और यह कि उनके सिद्धांतों ने प्लेटो के दिमाग पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। उनका मुख्य विचार यह था कि ब्रह्मांड के रूपों, परिवर्तनों और अन्य घटनाओं के नीचे एक तक एक स्थायी सिद्धांत मौजूद है। इस प्रकार उनके दृढ़ कर्मता की कुंजी एकता है। कई को विकसित करता है और यह कई को व्याप्त करता है, उसी से, उसी के द्वारा और उसी में सब कुछ कार्य। अपने लेखक के व्यक्तिगत विचारों या सिद्धांतों को जनता पर थोपना नहीं है और न ही विचार विभाग में एक क्रांति पैदा करने के लिए एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में ढोंग करना है। यह धार्मिक दर्शन और मानव जाति की सार्वभौमिक परंपराओं का एक संक्षिप्त सारांश है। हम यह दिखाना चाहते हैं कि मनोविज्ञान और दर्शन की असंख्य असफलताएं तब तक जारी रहेगी जब तक कि पश्चिम के ये ढोंग करने वाले अधिकारी सुदूर पूर्व के ब्राह्मणों और लामावादियों के पास नहीं जाते और उन्हें सम्मान पूर्वक सच्चे विज्ञान की वर्णमाला प्रदान करने के लिए कहते हैं। जेनोक्रेट्स ने जानवरों के भोजन को खाने से मना कर दिया क्योंकि पाइथागोरस की तरह उनके स्वामी और मॉडल के हिंदू संत थे। जेनोक्रेट्स को उच्चतम पुण्य को छोड़कर हर चीज को पूरी तरह से तिरस्कार करते हुए चित्रित किया और उनके चरित्र की स्टेनलेस और गंभीर तपस्या को वर्णन किया। हमें अपनी स्थलीय प्रकृति में टाइटैनिक तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए कामुक अस्तित्व की अधीनता से खुद को मुक्त करना होगा। जेलर कहते हैं, पवित्रता यहाँ तक कि हमारे दिल की गुप्त लालसाओं में जिन्होंने आत्मा और दिव्य आत्मा को एक कण के रूप में माना, प्रकाश के शाश्वत महासागर से ली गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। इसके संस्थापकों का उद्देश्य प्रकृति की अधिवासी शक्तियों में व्यावहारिक रूप में प्रयोग करना था और ईसाइयों के बीच पूर्वी धार्मिक दर्शन के बारे में जानकारी एकत्र करना और उनका प्रसार करना था। लेकिन कुछ सबसे प्रतिष्ठित अधिकारी इसका उल्टा कर रहे थे। मैक्स मूलर कहते हैं, कई चीजें अभी भी हमारे लिए अस्पष्ट है। वह आगे कहते हैं, जहाँ तक हम पता लगा सकते हैं, मनुष्य के पद चिन्हों पर चलते हुए इतिहास के सबसे निचले तबके पर भी हम उसे पहले से ही एक ध्वनि और शांत बुद्धि का दिव्य उपहार देते हैं और एक पशुपूर्णता की गहराई से धीरे धीरे उभरने वाली मानवता का विचार कभी नहीं हो सकता, चाहे अरस्तु की विधि हो या प्लेटो की पद्धति। यह एक तथ्य है कि मनुष्य के आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूपों को प्राचीन दार्शनिकों द्वारा अच्छी तरह से समझने का दावा किया जाता है। उन्होंने उस ग्रह पर मानव अस्तित्व की अंतहीन अवधियों को चक्रों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक मानव जाति धीरे धीरे उच्चतम सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंच गई और धीरे धीरे बर्बरता में ढल गई। मानव जाति के इतिहास का स्वर्ण, रजत, तांबे और लोह युग में विभाजन एक कल्पना नहीं है। प्रेरणा और चेतना के युग के बाद निरपवाद रूप में आलोचना और अचेतना का युग आता है। इस प्रकार सभी महान चरित्र जो मानव के इतिहास में दिग्गजों की तरह ऊपर उठते हैं, जैसे आध्यात्मिक और सिकंदर के क्षेत्र में बुद्ध, सिद्धार्थ, यीशु, मैसेडोनियन और नेपोलियन महान भौतिक विजय के दायरे में, लेकिन मानव प्रकार की छवियां थी जो 10,000 साल पहले अस्तित्व में थी, पुनः उत्पन्न हुई
हमारी दुनिया की नियति को नियंत्रित करने वाली रहस्यमयी शक्तियों द्वारा। मानव प्रकृति एक सर्वोच्च शक्ति के लिए सहज इच्छा महसूस करती है। श्री अरबिंदो भगवान प्रकाश स्वतंत्रता एक ईश्वर के बिना ब्रह्मांड एक निष्प्राण लाश प्रतीत होगा। मानव जाति के पास एक सहज अदम्य लालसा है जिसे किसी भी धर्म में पूरा किया जाना चाहिए। यह अमरता के प्रमाण के लिए तड़प है। धन्यवाद। एक पार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, समय पर कंप्लीट किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपने पार्ट 2 की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। Thank you. It has lately been fashion to speak of the untenable conceptions of the uncultivated past. Fashion hai that past was uncultivated, and their conceptions, they were untenable, not reachable. The geologists believe that all the archaic races were in a state of dense barbarism. But some of the most eminent authorities maintain the reverse, means they don't agree with this theosophy, these geologists. Max Muller says many things are still unintelligible to us. We cannot understand them. He says further, as far as we can trace back the footsteps of man, even on the lowest strata of history, we see the divine gift of a sound and sober intellect belonging to him from the very first. When we pass through the foot and take the footsteps, we can see that the divine gift of a sound and sober intellect belonging to man from the very first. So that barbarism point is ruled out. And the idea of humanity emerging slowly from the depths of an animal brutality can never be maintained again. Max Muller says, whether Aristotle's or Plato's method, it is a fact that both the inner and outer natures of man are claimed to have been thoroughly understood by ancient philosophers. So ancient philosophers have understood inner and outer nature of man, both inner and outer nature. They divided the interminable periods of human existence on this planet into cycles, during each of which mankind gradually reached the culminating point of highest civilization and gradually lapsed into barbarism. It is happening now with this century also. We have to be very careful about it. Stephen Hawking even, he says that artificial intelligence is going to prove to be a Bhasmasur. So one has to be aware of that. Otherwise, we will again go back to their barbaric ages. The division of the history of mankind into golden, silver, copper, and iron ages is not a fiction. Kalpana nahi hai. An age of great inspiration and unconsciousness is invariably followed by an age of criticism and consciousness. So it is a cycle, and that cycle moves like that. Thus, all great characters who tower like giants in the history of mankind, like Buddha, Siddhartha, and Jesus in the realm of spiritual, and Alexander the Macedonian, and Napoleon the Great in the realm of physical conquest. These two in the realm of physical conquest, and the other two in the realm of spirituality, were but reflected images of human types which had existed 10,000 years before, reproduced by the mysterious powers controlling the destinies of our world. They control the destinies of our world. Of course, it is not out of context, but when Hitler was trying to control the destiny of the world, I can concretely prove that Sri Aurobindo and the mother, they applied their force. Mother even talked to Hitler
in the voice of that Asura who used to guide him. And she told him to go to Russia. And there he was totally shaken and broken. So these are the world controlling forces. Human race feels an intuitional yearning for a supreme power. Man has a yearning for supreme power. He writes in Life Divine, Sri Aurobindo, he writes, man yearns for God, light, freedom, and immortality. All these four aspects are always and encouraging him to go ahead. God, light, freedom, and immortality. Without a God, the cosmos would seem to it like a soulless corpse without soul. And without God, he would feel the cosmos like that. Mankind have one innate, irrepressible craving that must be satisfied in any religion. Religion is supposed to satisfy that craving. This is the yearning after the proofs of immortality. Man wants immortality. And that's why the religion must satisfy that craving of mankind. Sir Thomas Browne, she quotes, it is the heaviest stone that melancholy can throw at a man to tell him that he is at the end of his nature, or there is no future state to come. So it is a matter of great grief to mankind to say that he has no future, or that he is at the end of his nature, because man always aspires for the future glories. From Pythagoras, the first philosopher, who was initiated into the mystery of uniting one's self with the deity through abstract contemplation. How can one unite abstract contemplation down to the modern adepts? From Pythagoras to modern adepts, it was well known that in the land of Brahmanas and Gautam Buddha, the sources of hidden wisdom are to be sought after. Sources are to be sought after. And that's why Swami Dayananda Saraswati, he asked Max Muller that you don't believe that you have got all the scriptures. You have only the left out portion of our scriptures. If you really want to know our scriptures, you come with me, I will take you to Mutt. And there, in Himalayas, I will give you what actually the scriptures are. It is for future ages to discover the grand truth. This grand truth is to be discovered by future ages and accept it as such, whereas now it is degraded as a low superstition. So many Oriental beliefs are considered to be superstition, but it is not so. But did anyone, even the greatest scientists, know of India? What did they know of India? She here looks like a lawyer, arguing for the Oriental knowledge. If I have to act for Madam Blavatsky, I would act as a lawyer. She's arguing like that. What did anyone, even the greatest scientists, know of India, Tibet, and China? Until the last quarter of this century, till then they did not know. That most untiring scholar Max Muller tells us that before then, not a single original document of the Buddhist religion had been accessible. It was not accessible. That 50 years ago, now 200 years, 50 years ago, there was not a single scholar who could have translated a line of the Veda, a line of the Zen Avesta, or a line of the Buddhist Tripitaka. Max Muller speaks. And even now, that science is in possession of very incomplete editions of these words, and nothing of the sacred literature of Buddhism. They don't know anything. It is India, the country less explored and less known than any other. It was now it is explored because yoga has spread all over the world. But that time she says that
country less explored and less known than any other, that all the other great nations of the world are indebted. They are in debt of India for their languages, arts, legislature, and civilization. And she proves in the Secret Doctrine also all these, how they are inherited from India. Impaired for a few centuries at the epoch of Alexander the Great, India had already passed the period of her splendor, was completely stifled in the subsequent ages. Due to these invaders, it was stifled. French philosopher Jacoliot claims to have translated every ancient palm leaf manuscript which had the fortune of being allowed by the Brahmins of the pagodas to see. Brahmins allowed him to see this, and he saw palm leaf manuscript. In one of his translations, we found passages which revealed to us the undoubted origin of the keys of Saint Peter and account for the subsequent adoption of the symbol by their holiness, the Pope of Rome. So the keys from Saint Peter as well as His Holiness, the Pope of Rome. It shows that the Brahmatma was sole guardian of the mystic formula, resume of every science, contained in the three mysterious letters AUM, Om, which signify creation, conservation, and transformation, and which rendered him who came into the possession of its key nearly the equal of the Brahma himself. She has given us the key. Pythagoras and Plato, others, they said that through contemplation, by perfecting, by purifying the soul. But here is expressed that only through this possession of its key, morning and evening, when the Sushumna is active, if one can chant Om for 15 minutes loudly and then mentally, I am convinced that one can know Brahma, one can be the equal of the Brahman. The Brahmatma alone possessed this key and transmitted it in a sealed casket to his successor. Through initiation only it was given. Is this clear enough? She asked. And will the Catholics still maintain that it was the Brahmanas of 4,000 years ago who copied the ritual symbols and dress of the Roman pontiffs? Can they claim now? What we desire to prove is that underlying every ancient popular religion was the same ancient wisdom doctrine, one and identical, professed and practiced by the initiates of every country who were aware of its existence and importance. So ancient wisdom doctrine was practiced because it was identical. It was professed and practiced by the initiates of every country. Mr. Jacoliot writes, we were one day inquiring of a Brahman of the pagoda belonging to the school of Vyas, whether he believed in the existence of God. He answered as smiling, Aham eva param Brahman. I am myself a God. Aham Brahmasmi. What do you mean by that? I mean that every being on every being in every aspect on earth, however humble, is an immortal portion of the immortal matter. It is a fact concretely described by the disciple of Vyas. If the Hindu philosophy teach the presence of a degree of soul in the lowest forms of vegetable life, means everyone, even the ant or the elephant, everything has a soul in it. And it is equal, not more or less. And that's why it is called Samam Brahma. And even in every atom in space, even in every atom also the same presence, that degree of soul is present. How is it possible that
it should deny the same immortal principle to man? Actually, we are all born of atoms. And if we call from the biological language, we are all made of cells. Now, these atoms, they form a body. If they are in great speed, that is the RPM is very high, then it is in gaseous form. Little less, then in liquid form. And solid, then in solid form. So this is the how everything is composed of. Similarly, the cells in our body, they are also, I have read that they communicate with each other with the language of light. And then if these cells, they slowly get divinized, as the Mother and Sri Aurobindo has proved. When they slowly get divinized, then only man's consciousness be changed. And consciousness, change of consciousness is the only key to these human problems. And even the President of America, he was well known for other affairs. But he was asked in an economic conference, world conference, that what is, President, what is the problem? Solution. Problems are many. Then he also said that change of consciousness is the only solution. And the state of consciousness can be there only if the cells change. They said how to behave. They behave in a separate, different way. So this is a complete science, and which both Madam Blavatsky and the Mother, luckily they go parallel in depicting this science. So how can it be denied that the same immortal principle is there in man also? And if it once admit the immortal spirit in man, if we admit that there is an immortal spirit in man, how can it logically deny the existence of the parent source, the eternal cause? If it is there in human being, then it can be there in the source also. That is an eternal cause. Neither rationalists nor sensualists who do not comprehend Indian metaphysics should estimate the ignorance of Hindu metaphysicians by their own. She has warned them that you cannot estimate them, overestimate or underestimate. But you cannot do that unless you have this particular knowledge. Our examination of the multitudinous religious faiths that mankind early and late have professed indicates that they have all been derived from one primitive source. Everyone, whether Muhammad Sahib, whether Zoroaster, or Buddha, or Mahavir Swami, or Jesus, they all derived knowledge from contacting with the higher world. And that was given to them not through words, but through insights. And through insights, they could get the knowledge. But since truth is one, but it has so many aspects, everyone received particular aspect which was relevant to his age. The Buddha told nirvana, Jesus said of love, like that. It would seem as if they were all but different modes of expressing the yearning of the imprisoned human soul for intercourse with supernal spheres. Man wanted to have an intercourse with supernal spheres, and this is an expression. It would seem as if they were all but different modes of expressing the yearning of that particular imprisoned human soul. As the white ray of light is decomposed by the prism into various colors of the solar spectrum, so the beam of divine truth, in passing through the three-sided prism of man's nature, has been broken up into various colored fragments called religions. And as the rays of the spectrum by imperceptible shadings
merge into each other. So the great theologies that have appeared at different degrees of divergence from the original source have been connected by minor schism, schools, offshoots, the one side of the other. Combined, all these are combined. This aggregate represents one eternal truth. Separate, they are but shades of human error and signs of imperfection. And that's why there are maximum wars in the name of religion. And lastly, as the watch passes from hand to hand and room to room in a factory, one part being added here and there, until the delicate machine is perfected, according to the design conceived in the mind of the master before the work was begun, the one who wanted to compose that particular watch. So according to ancient philosophy, the first divine conception of man takes shape little by little in the several departments of the universal workshop. And the perfect human being finally appears on our scene. Thus, nature never leaves her work unfinished. It continues and continues, and that's why we have evolution. So, thank you very much for giving me the opportunity to express myself. Thank you so much for such a wonderful subject. और भास्कर जी, तेंदुलकर जी, अब आप मराठी में कंटिन्यू कीजिए. आपके पास भी थोड़े 3 मिनट ज्यादा हैं, तो आराम से कहिए. धन्यवाद. सर, अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट नहीं हुआ सर. Hello. Yeah. Now your voice is clear. Am I audible? Yes. तर हा जो दुसरा भाग आहे हा बराचसा तत्वज्ञानपर आहे. आपण थिओसॉफी मध्ये जे शिकलो की सगळ्याची निर्मिती ही एकाच तत्वामधून झालेली आहे. चैतन्य हे सगळीकडे आहे, प्रत्येक अणुरेणूमध्ये भरून राहिलेलं आहे. आणि जे मूळ चैतन्य आहे त्याचाच अंश प्रत्येकामध्ये आहे. ते एकच तत्व सर्वांना व्यापून राहिलेलं आहे. सर्वांचं अस्तित्व त्याच्यापासून आहे, त्याच्यामधून आहे आणि त्याच्यामध्येच आहे. त्यामुळे ते नाही असं काहीही नाही. ह्या तत्वाभोवती ही सगळी शिकवण गुंफलेली आहे. आणि ह्या पुस्तकाचा, आयसिस अनवेल्डचा उद्देश कोणत्याही प्रकारे हे विचार समाज मनावर लादण्याचा नाही आहे. याच्यामध्ये आपण नेहमी थिओसॉफीमध्ये फ्रीडम ऑफ थॉट बद्दल बोलतो, त्याप्रमाणे हे विचार समजून घेण्याचा, त्याच्यावर मनन चिंतन करण्याचा आणि केवळ वैज्ञानिक स्वरूपाचे ते आहेत असं भासवून कोणत्याही प्रकारे वैचारिक क्रांती घडण्याचा याच्यात उद्देश नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलंय. हे आपल्याला समजून घ्यायचंय ते अंतर्मनाने, अंतर्दृष्टीने आणि आंतरिक अनुभूतीने समजून घ्यायचं आहे. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये अनेक धर्मांचा आणि त्यांच्या तत्वज्ञानाचा उल्लेख आहे. मानसशास्त्र आणि तत्वज्ञान याची जी पाश्चिमात्य जगातली प्रगती आपण पाहिली तर त्याच्या तुलनेने HPBनी असं म्हटलेलं आहे की जोपर्यंत हे पाश्चात्य जगातील मानसशास्त्रज्ञ आणि तत्वज्ञ पौरवात्य जगातील ब्राह्मण आणि लामा यांच्याकडे वळत नाहीत,
आणि त्यांना ह्या गोष्टींची अधिक माहिती आहे आणि त्यांच्याकडून आपल्याला हे ज्ञान मिळू शकेल ह्या विश्वासाने आणि श्रद्धेने जात नाही तोपर्यंत पाश्चिमात्य विज्ञानामध्ये, मग ते मानसशास्त्र असो, तत्वज्ञान असो, ह्या त्रुटी चुका अशाच घडत राहतील. आणि म्हणून ह्या ग्रंथाचा तो एक उद्देश आहे की पाश्चिमात्य जगाची जी विचार विन्मुखता पूर्वीच्या बाबतीत होती ती बदलून त्यांना पूर्वीच्या दिशेने वळवणं, आपलं जे सनातन ज्ञान आहे, ज्याला आपण डिव्हाइन विस्डम, एन्शंट विस्डम म्हणतो, जे मानव जातीच्या आरंभाला आपल्या आध्यात्मिक गुरूंनी, स्पिरिच्युअल इन्स्ट्रक्टर्सनी आपल्यापर्यंत आणून पोहोचवलेले आहे, ते समजून घेणं आवश्यक आहे. ते केवळ भौतिक विज्ञानाने समजून घेता येणार नाही. आणि म्हणून हिंदू ऋषी हे ह्या ज्ञानाचे एक प्रकारे स्रोत आहेत. इव्हन पायथागोरसच्या बाबतीत त्यांनी हे म्हटलं होतं की त्यांचे गुरु हे इकडचे आहेत. त्यामुळेच पूर्वेकडच्या ज्या काही कल्पना आहेत त्या त्यांच्या शिकवणुकीमध्ये प्रामुख्याने दिसतात. त्यांच्या शिष्यांना मांसाहार वर्ज्य होता. 40 दिवसाची तपस्या त्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी घेतली जायची. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या पूर्वेकडून त्यांनी घेतलेल्या होत्या आणि ती थिओसॉफीची सुरुवात होती. थिओसॉफी ऑफ 16th सेंचुरी. ते जे डिसायपल्स होते त्यावेळचे, पार्सेलिस म्हणा, प्लॅटो म्हणा वगैरे, त्याच्या बाबतीत उल्लेख केला की फायर टेकन फ्रॉम इटर्नल ओशन ऑफ लाईट. तर हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की जो सोर्स आहे तो सोर्स इटर्नल आहे आणि दॅट हॅज बीन कॉल्ड ओशन ऑफ लाईट. तो प्रकाश आहे, ज्ञानाचा प्रकाश आहे. अज्ञानात वावरणाऱ्यांना रात्रीमध्ये असल्यासारखे वावरावं लागतंय आणि ज्यावेळी ते प्रकाशात येतात तेव्हा खरा दिवस उजाडतो. अकल्ट पॉवर्स ची जोपर्यंत आपल्याला नीट ओळख पटत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने आपल्याला सत्य जे आहे, जे धर्माच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न पौरवात्य धर्मशास्त्राने आणि विज्ञानाने केलेला आहे, तो ओळखला पाहिजे. नाहीतर जी सध्या म्हणजे त्या काळात जी फॅशन होती त्याचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे, अनटेनेबल अँड कन्सेप्शन ऑफ अनसिव्हिलाइज्ड अनकल्टिवेटेड पास्ट. म्हणजे आपला जो भूतकाळ आहे त्याबद्दलच्या त्यांच्या कल्पना ह्या अतिरंजित आहेत आणि त्याच्यामध्ये सत्याचा अपलाप आहे. खरं म्हणजे आपल्याकडे पूर्वी जी काळाची विभागणी वेगवेगळ्या युगामध्ये केलेली होती, सुवर्णयुग, रजतयुग, ताम्रयुग, लोहयुग, ह्या काही केवळ कल्पना विलासाच्या गोष्टी नाही आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. उत्क्रांतीच्या प्रगतीमध्ये माणूस उच्च कोटीला पोचतो आणि पुन्हा तो खाली येतो. तर ही जी कालसापेक्ष उन्नती आणि अवनती आहे ते दर्शविणारी ही वेगवेगळी युग आहे.
अलेक्झांडरने पौरवात्य देशांना आपल्या सामर्थ्याने पादाक्रांत केलं, त्यावेळी हे पौरवात्य देश हे सुवर्णयुगानंतरच्या काळातले देश होते. अत्यंत उंचीवर पोचलेले हे देश नंतरच्या काळात त्या ज्ञानाचा एक प्रकारे काही काळ लोप झाल्यामुळे म्हणा किंवा त्याचं आचरण थांबल्यामुळे म्हणा, अशा स्थितीत आले की त्यांचा उज्ज्वल भव्य दिव्य असा भूतकाळ ते विसरून गेले आणि त्यामुळे परकीय दास्याखाली आले आणि त्यांचा विकास थांबला. तर ही वस्तुस्थिती पाश्चिमात्य देशांनी समजून घेण्याची गरज आहे. कारण आपल्याला दिसतं की थिओसॉफीच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये सुद्धा मास्टर्सना ही मोठी अडचणीची गोष्ट वाटली, कारण पश्चिमी संस्कृतीमध्ये वाढलेल्याला ह्या गोष्टी समजून देणं ही मोठी अवघड गोष्ट होती. हे एवो ह्यूमच्या बाबतीत त्यांना आढळून आलं. त्यांना जो प्रचंड अहंकार होता पाश्चिमात्य संस्कृतीचा, पाश्चिमात्य वैज्ञानिक प्रगतीचा, संस्कृतीचा, तो पूर्वेकडून काही शिकून घेता येईल ह्या समजुतीच्या आड येत होता आणि त्यामुळे महात्म्यांना सुद्धा त्यांना अनेक गोष्टी सांगणं शक्य झालं नाही. त्यामुळे ती मानसिकता तयार करणं हाही आयसिस अनवेल्ड या ग्रंथाचा एक उद्देश होता आणि म्हणून तो पहिला ग्रंथ त्यांनी लिहिला म्हणण्यापेक्षा मास्टर्सनी त्यांच्याकडून तो लिहून घेतला. ह्या व्याख्यानामध्ये अनेक गोष्टींचा उल्लेख व्याख्यात्यांनी केलेला आहे. मॅक्स मुलरनी स्वतः हे मान्य केल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे की मेनी अनइंटेलिजिबल थिंग्स आर स्टील देअर. म्हणजे त्यांनी अनेक गोष्टी समजून घेण्याचा मॅक्स मुलरनी प्रयत्न केला, पौरवात्य ग्रंथांचं अध्ययन केलं, तरी सुद्धा ह्या गोष्टी समजून घेता आल्या नव्हत्या. कारण आपलं बरंचसं ज्ञान हे उघडपणे सांगितलेलं नाही आहे, तर इट इज वेल्ड अंडर सिम्बॉल्स. आणि ते अनव्हेल करणं, ते सिम्बॉल्सचं आवरण दूर करणं आणि ते ज्ञान समजून घेणं आवश्यक आहे. याची जाणीव झाली पाहिजे. ती मॅक्स मुलरना कितपत होती माहिती नाही. इव्हन व्याख्यात्यांनी याचा उल्लेख केला की दयानंद सरस्वतींनी मॅक्स मुलरना हे सांगून दिलं की तुम्ही जर माझ्यामध्ये आलात तर मी तुम्हाला हिमालयामध्ये नेईन आणि इथलं जे काय गुप्त ज्ञान आहे, रहस्यमय ज्ञान आहे, त्याची ओळख तुम्हाला पटेल. हे स्वामी दयानंद सरस्वतींना मॅक्स मुलरनं सांगावं लागलं. व्याख्यात्यांनी याचाही उल्लेख केला की मदर किंवा अरबिंदो यांनी सुद्धा हिटलरच्या बाबतीत ही गोष्ट त्याला सांगायचा प्रयत्न केला की ज्या पद्धतीने जग पादाक्रांत करण्याच्या आसुरी महत्वाकांक्षेने त्याने आपले सामर्थ्य वाढवलं, जे पूर्वीच्या काळात अलेक्झांडर द ग्रेट किंवा इतर नेपोलियन यांच्या बाबतीत घडलं, तसंच हिटलरच्या बाबतीतही झालं. आणि मदर आणि अरबिंदो यांनी त्यापासून त्याला परावृत्त करायचा प्रयत्न केला. तर ह्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी केवळ विज्ञान पुरेसं नाही, तर ज्याला आपण अकल्ट ज्ञान म्हणतो, गुप्त विद्या म्हणतो, डिव्हाइन विजडम म्हणतो, त्याची ओळख आपल्याला करून घेतली पाहिजे. विज्ञानाचे नियम आहेत त्याच्या पलीकडे जाऊन. हॅलो सर, 1 minute to sum up, sir. As you may allow me, shall I
फिनिश नाउ? सर 1 मिनट है, 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। Okay. थैंक यू सर। So what is important is that the concept of evolution, उत्क्रांतीची जी आपली सिद्धांत आहेत ते डार्विनिझमवर अवलंबून नाही आहेत, तर इंटेलिजन्स केम फर्स्ट. हे चैतन्य, ही बुद्धी, ही मूळपासून अगदी आदिमानवामध्ये सुद्धा होतीच, आणि त्याचा फक्त विकास याच्यामध्ये झाला पाहिजे. म्हणजे ॲनिमल ब्रुटॅलिझम हा जो आहे, जो पाशवी स्वरूप आहे, त्याच्यातून ह्याचा उदय होणार नाही आहे, तर सुप्त स्वरूपामध्ये दैवी शक्ती किंवा दिव्यत्व जीवात्म्याच्या ठिकाणी आहे, त्याचा विकास होऊनच मानवी उत्क्रांती होणार आहे, त्याच्यातूनच तो पूर्णत्वाला येणार आहे. हा विश्वास बाळगणं आवश्यक आहे, आणि ते समजावून देणं, समजून घेणं आणि आचरणात आणणं या उद्देशाने आयसिस अनवेल्ड या ग्रंथाचं लिखाण HPBने केलेलं आहे. आणि तो उद्देश सफल होण्यासाठी जरी सिक्रेट डॉक्ट्रिन हा नंतरचा ग्रंथ त्याच्यापेक्षा पुष्कळ अधिक सरस झालेला असला, तरी सुद्धा त्याला कॉम्प्लिमेंटरी असा आयसिस अनवेल्डचा अभ्यास ठरू शकतो. त्या दृष्टीने ह्या अभ्यासाला पूर्णत्व येण्यासाठी आजचं हे व्याख्यान उपयुक्त ठरणार आहे, एवढं सांगून मी या ठिकाणी थांबतो. थैंक यू तरल जी। थैंक यू तेंदुलकर जी। रुद्राक्षी, अपना हिंदी वाला समाप्त कीजिए, आपके पास 9 मिनट हैं। धन्यवाद। जी सर। नमस्कार सभी को। सर थॉमस ब्राउन ने कहा, यह सबसे भारी पत्थर है जो उदासी एक आदमी को यह बताने के लिए फेंक सकती है कि वह अपनी प्रकृति के अंत में है या आने वाली कोई स्थिति नहीं है। पाइथागोरस से पहले जो दार्शनिक थे, जिन्हें अमूर्त चिंतन के माध्यम से देवता के साथ स्वयं को एकजुट करने के रहस्य में दीक्षा दी गई थी, आधुनिक अनुयायियों तक यह सर्वविदित था कि ब्राह्मणों और गौतम बुद्ध की भूमि में स्रोत छिपे हुए ज्ञान की खोज करना जाना जाता है। इस महान सत्य की खोज करना और इसे इस रूप में स्वीकार करना भविष्य के युगों का काम है, जबकि अब इसे एक निम्न अंधविश्वास के रूप में अपमानित किया जाता है। इस सदी के अंतिम 25 वर्षों तक भारत, तिब्बत और चीन के बारे में महानतम वैज्ञानिकों को भी क्या पता था? वह सबसे अथक विद्वान मैक्स मूलर हमें बताता है कि इससे पहले बौद्ध धर्म का एक भी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं था कि 50 साल पहले, जो अब 200 साल हो गए हैं, एक भी विद्वान ऐसा नहीं था जो बौद्ध धर्म की एक पंक्ति का अनुवाद कर सकता था। वेद, जेड, अवेस्ता की एक पंक्ति या बौद्ध त्रिपिटक की एक पंक्ति, और अब भी उस विज्ञान के पास इन शब्दों के बहुत ही अधूरे संस्करण हैं और बौद्ध धर्म के गुप्त पवित्र साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं है। मसलन यह भारत है, देश कम खोजा गया और किसी भी अन्य की तुलना में कम ज्ञात है कि दुनिया के अन्य सभी महान राष्ट्र अपनी भाषाओं, कलाओं, विधायिका और सभ्यता के लिए ऋणी है। सिकंदर के युग में कुछ शताब्दियों के लिए प्रभावित सिकंदर महान भारत पहले ही अपने वैभव की अवधि को पार कर चुका था, बाद के युगों में पूरी तरह से दबा हुआ था। फ्रांसीसी दार्शनिक जैकेलियट का दावा है कि उन्होंने पैगोडा के ब्राह्मणों द्वारा अनुमत और प्राचीन ताड़पत्री पांडुलिपि का अनुवाद किया है। उनके एक अनुवाद में हमें ऐसे अंश मिले हैं जो हमें सेंट पीटर की चानियारी की निसंदेह उत्पत्ति का खुलासा करते हैं और पवन पावन रोम के पोप द्वारा प्रतीक को बाद में अपनाने के लिए रखते हैं। वह हमें दिखाता है ब्रह्मात्म रहस्यवादी सूत्र का
एकमात्र संरक्षण था। हर विज्ञान का सार 3 रहस्यमय अक्षरों AUM में निहित होता है, जो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन को दर्शाता है, और जिसमें उसे इसकी कुंजी के कब्जे में लगभग बराबर कर दिया, स्वयं ब्रह्मा। क्या यह काफी स्पष्ट है? और क्या कैथोलिक अब भी यही मानेंगे कि 4000 साल पहले के ब्राह्मणों ने रोमन धर्मशास्त्रों के रीति रिवाजों, प्रतीकों और पहनावे की नकल की थी? मारकर हम जो साबित करना चाहते हैं वह यह है कि हर प्राचीन लोकप्रिय धर्म के नीचे एक ही प्राचीन ज्ञान सिद्धांत था, एक और समान, जिसे हर देश के दीक्षितों द्वारा माना और अभ्यास किया जाता था, जो इसके अस्तित्व और महत्व के बारे में जानते थे। श्री जोकोइस्ट लिखते हैं, स्कूल के एक ब्राह्मण से ईश्वर में उनके विश्वास के बारे में प्रश्न किया गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझ में ही ईश्वर है। मेरा मतलब है कि पृथ्वी पर सब कुछ, हालांकि अमर पदार्थ को एक अमर हिस्सा है। यदि हिंदू दर्शन वनस्पति जीवन के निम्नतम रूपों में और अंतरिक्ष में हर परमाणु में आत्मा की उपस्थिति की शिक्षा देता है, तो यह कैसे संभव है कि वह मनुष्य को उसी अमर सिद्धांत से वंचित कर दे? और अगर यह एक बार मनुष्य में अमर आत्मा को स्वीकार कर लेता है, तो यह मूल स्रोत शाश्वत कारण के अस्तित्व को तार्किक रूप में कैसे नकार सकता है? जो तर्कवादी और न ही कामुकतावादी, जो भारतीय तत्वमिस्ता को नहीं समझते हैं, उन्हें अपने स्वयं के द्वारा हिंदू तत्वज्ञानों की अज्ञानता का अनुमान लगाना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। मैं सिस्टर रंजना जी, ब्रदर भास्कर जी और ब्रदर तरल जी, मुंशी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी अनुवाद करने के लिए छूटा। धन्यवाद। कि मैंने लिखा था कि अगर किसी को भी कुछ प्रश्न या कुछ पूछना है तो रंजन जी भी हैं यहाँ पर। रंजन जी, आपका वीडियो ऑन करिएगा प्लीज, और आप पूछ सकते हैं। तेंदुलकर जी भी हैं, और अगर नहीं हो तो कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो, मैं दोनों स्पीकर से भी गुजारिश करूंगा कि वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय है। जी गौतम जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हिंदी जी। રંજનબેન, હા, તમે જે ઈસ્ટર્ન એડેપ્ટ ની વાત કરો છો કે જેને દૈવત મળતા હતા, એ કોણ હતા? એ વખતે તો ઈસ્ટર્ન એડપ્ટ્સ એ મોટા ભાગે જેને કહીએ ને ભારદ્વાજની શ્રેણીથી લઈને અગત્ય વગેરે, they were all present and she could contact them and through them એમના જે 3 પ્રશ્નો હતા, ગોળ શું છે, ક્યાં છે વગેરે, એના જવાબો એમને મળ્યા હતા. એટલે she was very much obliged to these eastern adepts. eastern adepts માટે એમણે સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનમાં વધારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જેમાં કયા કયા ઋષિઓએ, નારદથી લઈને અનેક ઋષિઓએ કઈ રીતે કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે તે પણ એમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે. થેન્ક યુ. थैंक यू जी, ધન્યવાદ. धन्यवाद। शिंदे जी, आप आए और चले गए शायद, नहीं वीडियो ऑफ है आपका। अभी आता हूँ। जी 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 जी। डायरेक्शन बदल दिया मैंने। ओके ओके, जी जी आइए। Thank you to all the speakers, very nicely explained, and it is very difficult to explore the knowledge given in the Isis Unveiled, but I must congratulate Sister RANJAN, Ben, Tendulkar and RUDRAKSHI also,
they have tried their best to say and bring some thoughts about the Isis Unveiled before us. I must congratulate TARAL, MUNSHI also. This is very, very difficult book. And we are thinking on it. Really, it is wonder. It contains everything. It has actually HP Blavatsky. She recorded and she received assistance while writing. And she asked to herself, can I write on this subject? Am I equal to that task? Such questions she asked, and this is recorded. But I simply sit down, she said, and was writing. Why? Because somebody who knows all was dictating me. My master and occasionally others whom I know in my travels. This is what she has explained, how the Isis Unveiled was written. And she said, please do not imagine that I have lost my senses while writing. But I wrote it consciously, and I wrote it so easily that it was actually no labor for me. Rather, it was real pleasure to write down, because I was just obeying and writing about metaphysics, psychology, philosophy, ancient religions, zoology, natural sciences, or what not. This is what it happened while writing this Isis Unveiled. And this inspires us to go through what is actually written in this, to read it individually as well as inspired by RANJAN and all other translators. Really, it inspires us to read it. But I would like to say here, and it has been told to us, that at the end of every, rather in the last quarter of the every century, something new happens. And here, Theosophical Society was founded, and Isis Unveiled and Secret Doctrines were written. And she explains us. She said, HPB said, she lifted only a tiny corner of a veil. So much is covered, only tiny corner of the veil is removed. She has lifted, yes, and released only a small portion of knowledge which is suitable to this modern age. But as RANJAN pointed out, as Macmuller pointed out, our understanding still remains fragmentary. Only few are managed to absorb and understand the existing wisdom. So it is quite clear. Isis Unveiled was written to bring ancient knowledge to the intellectuals of the Western world. So in other words, she spiritualized the spiritualism. Ancient wisdom to the Western mind, because Western mind was caught in scientific dogmatism and religious orthodoxy. This is the origin of the Isis Unveiled. This is what I want to say, few thoughts on the Isis Unveiled. And I once again thank to all the speakers and all the organizers. Thank you very much. Thank you, sir. सुदीप जी, कुछ पूछना है आपको? पूछना नहीं है सर। बोलिए बोलिए। मुझे एक बात कहनी है इस पुस्तक के बारे में। हाँ। जो सबसे खास बात ये है कि ये पुस्तक अपने आप में अनूठी है। इस पुस्तक को आप किसी भी दूसरी पुस्तक से कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पुस्तक ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार में और उस समय की जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे वर्ल्ड लेवल पे, सबको आकर्षित करने का काम इस पुस्तक ने किया। तो इस पुस्तक पे कुछ कहना तो इज जस्ट लाइक टू
टू शो द कैंडल टू सन है। ये Correct. कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, जी बस थैंक अपनी यू। बारी पे आप सभी को धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहता हो रंजन जी अंतिम हाँ में? जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। I would like to say that as I read Savitri by Sri Aurobindo, many a times I see the luminosity against the words. I see the brightness, the light. Let me confess that when I read both the Secret Doctrine and Isis Unveiled many a time and summarized both the books, I could also find that luminosity in those books. And I had to thank Madam Blavatsky for that. And that's why always in my prayer, I say, Madam Blavatsky, that is Om Hrim करके जो मंत्र है, मैं Madam Blavatsky को भी offer करती हूँ. And that then only we can have the real knowledge. Only from their consciousness, if we can touch that particular frequency, then only we are eligible to receive a little portion of that knowledge. That's what I want to add. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंत में बस हर्षवर्धन जी आए हैं, कुछ कहना चाहते हो? 1-2 मिनट में समाप्त करें। 8:18 हो रही। हाँ नहीं, it's really I'm very much late, but since that subject was in the particular way very near to my heart, and really I missed that particular lecture of RANJAN ji, but really I'm very happy that such subject is being discussed in our Triveni, and this kind of topics are really important. In occult science, we have different kinds of learning processes, and also whatever the esoteric knowledge comes out, that is the base also. So far as our understanding is concerned, what we feel after reading Isis Unveiled or Secret Doctrine, that is only the knowledge that comes out of our own understanding. And references are too many. Too many means we cannot understand in that way. So it is really difficult. The person like Ranjan ji, person like Shinde ji, those who are really studious, they can make us understand. So this is really very important thing. And I studied it 25 years ago, Isis Unveiled, and Secret Doctrine that 10 years ago. And also we had the study classes on Secret Doctrine also. But whatever the things that comes out of our mind and comes out of our heart, that is more important. So simplicity lies there, simplicity of our understanding is also there. Oh, of course, certain anecdotes are there, certain, I think, conventionalized stories are there that we have to understand. So what the Greek philosophers, the particular English literature also there. So in that way, our understanding expands. That is what we have to understand. So Yes. Isis and Osiris both in that way very symbolical aspects to understand the nature. So I think whatever we understand, that is really our own limitations, and out of that limitations we have to keep that center focus on that particular point. So this is what I understand. Thank you very much. थैंक यू सर। अतुल जी आगे बढ़े। केशवर जी, आपका गला दुरुस्त हो गया हो तो नहीं हुआ हो तो अतुल जी, आपने जो मुझे लिखा था व्हाट्सएप पे, वो कौन गाएगा? आप गाएंगे? मैं। ठीक है, कहिए। यस, शुरू करिए। धन्यवाद। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मां वया करे, शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मां वया करे, गुण थी भरेला गुणीजन देखी हयु मारू नृत्य करे। ए संतोना चरण कमल मा मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मा वह्या करे। दिन क्रूर ने धर्म विहोणा देखी दिल मा दर्द रहे। करुणा बीनी आंखों माथी अश्रुनो शुभ स्त्रोत वहे। मैत्री भावनु पवित्र जरणु
मुझ हैया मां वह्या करे। मार्ग बुलेला जीवन पथिक ने मार्ग चिंधवा उबो रहू। करे उपेक्षा ए मार्गनी तो ए समता चित्त धरू। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मां वह्या करे। चंद्र प्रभानी धर्म भावना हइये सौ मानव लावे। वैर जैर ना पाप त्यजीने मंगल गीतो ए गावे। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मां वह्या करे।